वासुदेवायां श्रीदुर्गा परमेश्वरी नमः। अतः सप्तदशोऽध्यायां श्रीव्यासोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्यां देवी पप्रच्छ दानवं का सा मन्दोदरी नारी कोऽसौ त्यक्तो नृपस्तये। षडर्को वा नृपं पश्चात्तन्मे ब्रूहि कदानगं विस्तरेण यदा प्राप्तं दुःखं वनितया पुनः। महिषोवाच सिंहणो नाम देशोऽस्ति विख्यात पृथिवीधरे गणपादसंयुक्तो जनधान्य समृद्धिमान्। चन्द्रसेनाविदस्तत्र राजा धर्मपरायणां न्यायदण्डधरा शान्तां प्रजापना तत्परां। सत्यवादी मृदु शूरस्ति तिक्षोर्निधिसागर शास्त्रविः सर्वधर्मज्ञो धनुर्वेदे अधिनिष्ठित। तस्या भार्यां वरारोहां सुन्दरी सुभगा शुभां सदाचारम् अधिसुमुखी पतिभक्तिपरायणां। नाम्नां गुणवती कान्ता सर्वलक्षणसंयुत सुषवे प्रथमे गर्भे पुत्री सां चादिसुन्दरीं पितां चादीव सन्तुष्ट पुत्री प्राप्य मनोरमां। मन्दोदरित्रे नामस्यां पिता चक्रे मुदान्यद इन्दो कलेव चात्यर्थं ववृधे सा दिने दिने। दशवर्षा यदा जात कन्या चादिमनोहरां वरार्थं निर्वधिश्चिन्तामावाच चादिने दिने। मद्रादेशादिपाशूरं सुधन्यो नाम पार्थिव तस्य पुत्रो अधि मेधावी कम्बुग्रीवो अधिविश्रुत ब्राह्मणैकदिदो राज्ञा संयुक्तो अस्य वरशुभां। सर्वलक्षणसम्पन्नां सर्वविद्यार्थपारगं राज्ञां पृष्ठतदा राज्ञीं नाम्नां गुणवती प्रियां। कम्बुग्रीवाय कन्यायां स्वां दास्यामि वरवर्णिनीं साधुं पत्युर्वचः श्रुत्वा पुत्रीं पप्रच्छ सादरं नारायणाम्। विवाहं ते पिता कर्तुं कम्बुग्रीवेण वाञ्छति तच्छ्रुत्वा मातरं प्राह वाक्यं मन्दोदरी तदा। नाहं पतिं करिष्यामि नेच्छामि अस्ति परिग्रहे कौमारं प्रथमास्तायां कालं नेष्यामि सर्वदा। स्वतन्त्रेण चरिष्यामि तपस्तीव्रं सदैव हि पारतन्त्र्यं परं दुःखं माद संसारसागरे। स्वतन्त्र्या मोक्षमित्याहुं पण्डिता शास्त्रकोविदां तस्मा मुक्ता भविष्यामि पत्यामीनां प्रयोजनं। विवाहे वर्तमाने तु पावकस्य च सन्निधो वक्तव्यं वचनं सम्यक् स्तुतद्धीनाम् अस्मि सर्वदा। स्वं श्वासुद्धेव वरवर्गाणां दासित्वं शुशुरालये पदिचित्तानुवर्तित्वं दुःखदरं स्मृतं कदाचित् पदिरन्यां वां कामिन्यां च भजेद्यति तदा महत्तरं दुःखं सपत्नी सम्भवं भवेत् तदेष्यां जायते पत्यो क्लेशश्चापि भवेत्। संसारे क्वासुगं मातर्नरीणां च विशेषदा स्वभावात् परतन्त्राणां संसारे स्वप्नधर्मिणीं
श्रुतं मया पुरां मादारुत्तानचरणात्मजाम् उत्तमः सर्वधर्मज्ञो ध्रुवादः परजो नृप पत्नीं धर्मपरां स्वादिं पतिभक्तिपरायणाम् अपराधं विना कान्तं त्यक्तवान् विपिने प्रियाम् एवं विधानि दुःखानि विद्यमानेन तु बद्धते कालयोगान्मृते तस्मिन् नारी स्यादुःखभाजनं वैदव्यं परमं दुःखं शोकसन्तापकारकं परोक्षिपतिते अपि दुःखं स्यादाधिकं गृहे मदनाग्निं विदग्धायां किं सुखं पतिसङ्घजं तस्मात् पतिर्न कर्तव्या सत्वत्येति मतिर्ममाम् एवं प्रोक्ता तदा मातां पतिं प्राह नृपात्मज नाज वाञ्छति वार्तरं कौमारं प्रददारिणीं प्रदज्जाप्यपरा नित्यं संसारादिमुखी सदा नां काङ्क्षति पतिं कर्तुं बहुदोष विचक्षणां भार्ययां भाषितं श्रुत्वा तदैव संस्थितो नृपां विवाहो न कृतं पुत्र्या ज्ञात्वा भावविवर्जितां वर्तमानां गृहेष्वेव पित्रामात्रज रक्षितां यौवनस्याङ्कुराजात नारिणां कामदीपकां तदापि सां वयस्यापि प्रेरितापि पुनः पुनः चगमेन पदिं कर्तुं ज्ञानार्थ पदवाक्षिणी एकदो ध्यानदेशं सा विहर्तुं बहुपादवे जगाम सुमुखी प्रेम्णां सुविदध्री गणसेवितां ते मे कृशोधरीं तत्रापश्यात् कुसुमिदालद पुष्पाणि चिन्नुदीरम्यां वयस्याभि समावृत कोसलादि पदिस्तत्र मार्गे दैववशात्तदाम् आजगामं महावीरो वीरसेनो अधीविश्रुताम् एकाकी रथामारूढ कदिचित् सेवकैवृत सैन्यं च पृष्ठतस्तस्यां समायादिशने दृष्टस्तस्य वयस्याभिर्दुरद वास्तवस्तदा मन्दोदैर्यै तदा प्रोक्तं समायादि नरपदी रथारूढो महाबाहो रूपवान् मदनो अभर मन्याहं नृपति कश्चित् प्राप्तो भाग्यवशादिह एवं ब्रुवत्यां तत्रासु कौसलेन्द्र समागत दृष्ट्वा तामसीदापाङ्गी विस्मयं प्राबभूवतीम् उत्तीर्यासां ददातूर्णं पप्रच्छ परिचारिकां केयं बालं विशालाक्षी कस्य पुत्री वदाशु मे एवं पृष्टादु सैरेन्द्रे तमुवाच शुचिस्मित प्रथमं ब्रूहि मे वीर पृच्छामि त्वं सुलोचनां को असि त्वं किमहायाद किं कार्यं वद साम्प्रतम् इति पृष्टस्तु सैरेन्द्र्या तामुवाच महीपदी कोसलो नाम देशो अस्ति